Hello, my dear young friends. I, Smita Chaudhary, am back again in Easy English. Today I'll take up a chapter of Standard 12 CBSE Aunt Jennifer's Tiger. This chapter you have in your second term final exams, and let us now see what is this poem saying. It is a very short poem, but it is weighty. It has a lot of weight. It has a lot of inner meaning. So let us see now Aunt Jennifer's Tiger, written by Adrienne Rich. And what is she telling about? She is telling us about what her married life is. She is a poet who writes about the social racism and gender inequality. So here we see that what are the constraints of a married life? What are the restrictions that a woman face in her normal married life? Everyday, day-to-day problems that she faces once the lady gets married. So यहाँ आज देखेंगे कि एक महिला वो अपना जिंदगी कैसे लिमिट्स में रह के बिताती है आफ्टर शी गेट्स मैरिड. शादीशुदा जिंदगी कैसे कंस्ट्रेंट्स में, रेस्ट्रिक्शंस में रहता है. क्या क्या वो नहीं कर सकती है, लेकिन आस तो रहता है करने का. तो आज हम देखेंगे कि what does this poet write about. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. So Aunt Jennifer, on a screen, she is making the tigers. She is weaving the tigers. And she does not show the tigers just walking about, but she shows that the tigers are prancing, jumping, leaping. So on the screen, the tigers are shown very aggressive, jumping, prancing about. Bright topaz denizens of a world of green. So bright topaz का color क्या होता है? Yellow. So the tigers, they are yellow in color. So she shows the yellow tigers against the world of green. So background green का है. वो screen में वो जो बना रही है, that screen is green colored background. And वो टाइगर्स जो बना रही है वो येलो, ब्राइट येलो कलर का है. डेनिजन्स, इनहैबिटेंट्स, जो कि उस जंगल में रहते हैं, वहाँ ड्वेल करते हैं, वो इनहैबिट करते हैं, जो रहते हैं, वो ब्राइट टोपैज येलो कलर्ड है, जो अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, द सराउंडिंग और द बैकग्राउंड इज ग्रीन, एंड she is showing the tigers to be yellow colored who are jumping about on the screen. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. So वो women folk या फिर वो Aunt Jennifer, वो डरती है. वो डरती है फ्रॉम द मेल फोक. शी इज फ्राइटेंड ऑफ द मेल फोक. बट जो टाइगर को वो बना रही है वो कॉन्ट्रास्ट है उसका नेचर से. सो दीज टाइगर्स दैट शी इज मेकिंग ऑन द स्क्रीन, they are totally in contrast to her nature. She is docile. She accepts everything. She accepts the domination of the male folk in her family. But here, the tigers that she is making, they are not frightened of the men, those who are standing beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Here they is representing the tigers. So they are moving in chivalric certainty. So chivalric elegance. They are moving heroically. They are moving royally. Chivalric certainty. C. Both the words are starting with C. So we can see that this is alliteration.
सो पोएटिक डिवाइस इस लाइन में सी और सी सेम लेटर्स से स्टार्ट होता है, तो इसको एलिटरेशन बोला जाता है। हियर सो दीज एनिमल्स, ये टाइगर्स डरते नहीं है मेल फोक से, इंसानों से, लोगों से, आदमी से वो डरते नहीं हैं। सो उन लोग हीरोइकली उन लोग चल रहा है वहाँ, दे आर मूविंग अबाउट, वहाँ चल रहा है दिस टाइगर्स, वो चल रहा है विथ सर्टेनिटी, एलिगेंटली, रॉयली वहाँ चल रहा है विथ करेज। So Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. So as she is weaving, वो टाइगर्स को जब वीव कर रही है, वुल से जब बना रही है, तब उसका the fingers are fluttering, the fingers are shaky because her health condition has deteriorated to such an extent that she is not able to pull the wool also with confidence, or not having that much of energy left in her that she can pull the wool properly. So Aunt Jennifer's fingers fluttering. और एक बार देखिए F. So both the words are starting with F and F, which shows that it is alliteration. So the fingers were fluttering when she was pulling the wool. Aunt Jennifer जब वो टाइगर्स को बना रही थी, वो वुल, वो नीडल को पुल करने में, खींचने में उसको ज़्यादा ताकत, ज़्यादा मेहनत लग रहा था, क्योंकि उसका बॉडी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन वैसा था ही नहीं कि वो वैसे अच्छा से उसको बिन सके, अच्छा से उसको पुल कर सके थ्रेड को। It finds even the ivory needle hard to pull. Ivory एलिफेंट का टस्क से जो बनता है, दैट इज व्हाट इज आइवरी। तो आइवरी से बना हुआ नीडल को खींचने में उसको दिक्कत हो रहा था। सो शी फाउंड दिस आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. So, अंकल, दैट आंट बोल रही है, सो आंट जेनिफर, जब तो उसका हस्बैंड हुआ अंकल। सो जब आंट जेनिफर का शादी हुआ तो अंकल, दैट इज हर हस्बैंड, उसको रिंग दिए थे। दिस रिंग हैज़ बिकम अ बर्डन फॉर हर। ये रिंग उसके हाथों में ऐसे बैठा हुआ है कि वो बर्डन है, और वो बर्डन को निभा रही है, वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही है। तो ये रिंग तो ज़्यादा वेट नहीं है, ऑब्वियसली द रिंग बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है ये मैसिव वेट, ये बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है ये रिंग जो अंकल दिए थे ड्यूरिंग द वेडिंग। It sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. So it has become a burden which she is not able to dissipate. She is not able to dissipate the responsibilities, the burden of a married life. When Aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. So when Aunt will die, एक औरत वो फैमिली इतना दिन से संभालते हुए आती है, उसका डेथ के बाद, उसके मौत के बाद भी वो उस फैमिली से जुड़ी रहती है। वो फैमिली से वो बाहर निकल नहीं पाती, वो बोझ से निकल नहीं पाती। सो अगर ये आंट जेनिफर का डेथ हो भी जाता है, स्टिल शी विल बी रिंग्ड विद द ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। लेकिन वो बोझ को उठाते हुए चलेगी। इवन इन हर ग्रेव शी विल बी कैरिंग द बर्डन ऑफ responsibilities along with her. She will be ringed with ordeals. Ordeals ka means hard task, difficult task, responsibilities that she was mastered by, that she was dominated by
that she was given by the uncle, that she was given by the men folk. So she is going to carry that responsibility along with her to the grave. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. So she might die. आंट जेनिफर का मौत हो जाने के बावजूद वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते हुए आगे चलेगी, वो संभालते हुए ग्रेव के अंदर तक जाएगी. बट द टाइगर्स दैट शी मेड, ये टाइगर्स यहाँ पे मैन फोक को सिंबलाइज कर रहा है. टाइगर्स आर रिप्रेजेंटिंग द मैन फोक, दैट वी विमेन under the constraint, under the domination of the men, they will keep on dying, but the men will keep on pacing about. The tigers in the panel that she made, they will be prancing proud and unafraid. Prancing proud is alliteration again. Poetic device PP, prancing proud, starting letter PP है, तो ये फिर से alliteration है. So it goes on prancing. The tigers will go on prancing proud and unafraid. Tigers वैसे ही they will keep on leaping, वैसे ही उन लोग उछल कूद मचाते हुए चल देगा. लेकिन women will keep, they will die always under the domination of the men folk. So this line is telling us again one more thing, that art, that she had made the tigers on the screen. So the art, that is art. So this art is immortal. Art will never perish. Art will never die. And human beings are mortal. They will always die. So human beings हमेशा से ही मरते रहेगा, and art हमेशा ही जीतेगा. Art will be everlasting. Art कभी भी खराब नहीं होगा. Art will never perish. It is immortal. So ये भी एक लाइन का सीख है. और एक चीज़ है, that is women will continue to die under the domination of male, and the men folk, they are always going to be crushing the women under them, suppressing them, oppressing them. So the constraints of married life, the women will always bear along with them. So this poem is telling us about male chauvinism. So it is the male quality, male egoistic quality, male chauvinism, which will always be dominating the women folk. I hope, children, you all must have understood this. If you have any queries or doubts, do write in this box and I will be surely trying to answer all your doubts. Thank you, children. Have a good day. Be prepared for your examination. Thank you so much.